Hi everyone, welcome to StudyIQ. Now, आज लेसन रे डिस्कस करिबा ओडिशा बजेट 2025 and 2026. सी बजेट जदि आमे डिस्कस करिबा कि प्रत्येक वर्ष बजेट आसी थाए एंड बजेट ए वर्ष बजेट मध्ये हम पई बहुत सिग्निफिकेंट रहिछि. Budget and economic survey of Odisha is very important for the writing mains exam for the OPSC. OPSC mains exam जो आगु को आपन को हबर अछि, and this is one of the most important topic I would say. With economic survey both will complement for your paper 3 of the GS and including those who are having different I would say what optionals as well. Let's say in terms of geography optional, somebody is having geography optional, he or she will get benefits of the schemes, right? The infrastructure by जो schemes रही that would be helpful for you writing the mains exam. And जो मानकर other subject रही जेमती social issues, you will have also benefits of getting the examples from the social issues and the social what, that is the schemes, social schemes rule for the governance as well, right? So that is why the economic survey and budget of Odisha is must read and listen. Lesson मु कहबी जो माने irrespective of your चाहे से एई वर्ष तमे मेंस दियो किंबा आगो को दियो बा प्रीलिम्स बोथ रे तुमको हेल्प करबो. चलो फिर आज हम देखबा इकोनॉमिक सर्वे. बट बिफोर दैट स्टडी आई को आपण मानक पई नै आसी जदि हम कहबा ओडिशा पीसीएस मेंस कॉम्बो बैच रहिछि जो थरे आपनकर हम कहबा टेस्ट सीरीज रहिछि, मेंस रही, क्रैश कोर्स रही, कॉम्बो बैच इज आल्सो देयर. दैट इज परीक्षा टेस्ट सीरीज रही जो माने मेंस दउछन्ते ओपीएससी मेंस हम कहबा 2023 जोटा कि हबार अछि राइट इन अप्रैल से हम कहबा. सो दैट कुड बी हम कहबा बहुत इंपोर्टेंस. तो जोटा मार्च मास रे हबार अछि राइट, दैट इज इन द मार्च हम कहबा. देन यू विल हैव राइट हम कहबा एसओ कथा नै जानतो. एसओ इज वेरी इंपोर्टेंट आल्सो हम कहबा एसओ मतलब बैच लॉन्च होइछि. That means हम कहि परिबा पारम OPSC ASO बैच फाउंडेशन बैच रही, that is the 15th February start होछि. आर बैच 2 भी मध्ये आसी जिवो. देन हम कहिबा देन प्रथम रही OSSC CGLs बैच फाउंडेशन बैच 15th February. This is also बैच 2 मध्ये आरो आसुछि. So these are the courses स्टडी आई को आपण मानक पई नै आसी ओडिसा रिलेटेड ऑल द एग्जाम्स सॉल्यूशन इन सिंगल प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट तो आज हमर टॉपिक रही कोन budget of Odisha. The budget of Odisha आमे कहबा is been presented by the honorable CM of Odisha मोहन चरण माझी जी. तो ये budget total value जदि आमे देखिबा, the total value of this budget is your what 2.9 lakhs crore. So the total value of this budget जदि आमे कहबा, the value of the budget is 2.9 lakhs crore, right? So this is the value of the budget. This one is the value of budget. Increase केते हिची त जदि हमें लास्ट ईयर बजेट को देखिबा, देखो लास्ट ईयर बजेट को जदि हम देखिबा 25,000 crores रो improvement हिची. That means the value is increased, right? From the 2.6 lakh crore to 2.9 lakh crore, so almost 25,000 increase हिची budget allocation बा budget चले. ना budget कोन ताले जदि हमें budget कहबा सिंपल्स how much we received, how much we spent. तो जेते हम केते रिसीव करूचे केते स्पेंड करूचे लास्ट ईयर कोन हितला जो लास्ट ईयर में बजेट रे जो पैसा बा जो एलोकेट हितला फंड तार कोन हला से सब को रिसर्च कोथरे हबा सेटा इकोनॉमिक सर्वे कहबो. ना बजेट रे हम कोन ना गवर्नमेंट रो गोटे इनकम सोर्स कोन हबो, गवर्नमेंट खर्च कोथरे करिवो. दिस इज जेमति हमर गोटे बजेट थाए कि ठीक अछि गोटे फैमिली रो एतिकी इनकम होउची, एतिकी खर्च हो, एतिकी सेविंग हो, एतिकी या हबो, एठी इन्वेस्टमेंट हो. दिस इज लाइक द बजेट आल्सो लाइक दैट, बट दैट इज इन अ स्मॉल स्केल, ये तो लार्ज स्केल रहबो बजेट, राइट? तेनु कर कि ए वर्षर जो बजेट रही छी, ए वर्षर थीम ऑफ द बजेट को जदि दिबा, दैट इज फोकस ऑन द समृद्ध ओडिशा फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. सो दिस इज द की थीम्स. तो बजेट रो जो थीम्स रही छी, the theme of the project is focus on समृद्ध ओडिशा and inclusive growth. ना देखो समृद्ध ओडिशा and inclusive growth अर्थात जो आमर टार्गेट रखिछंती ऑनरेबल सीएम ऑफ ओडिशा एंड ओडिशा गवर्नमेंट प्रेजेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट आसिला पर कहिसंती नारा दउछंती
के विकसित गांव विकसित ओडिशा बाय 2036 नाउ विकसित गांव विकसित ओडिशा कथा नहीं जो बा विकसित ओडिशा बाय 2036 ये जो नारा नहीं कि आसी चंती तो कोठी ना कोठी ताकू जदी हमें स्वाकार करिवर अछि बा से ड्रीम को जदी हमें सैटिस्फाई करियर अछि एंड वी हैव टू फोकस on the inclusive growth means every section and every sector of the economy. Every section, when I say every inclusive अर्थात कौन, when I say inclusive growth अर्थात सब सेक्शन रो ग्रोथ हबो एमति नै कि केवल आमे कहबा लेट्स से गोटे अर्बन रो ग्रोथ हबो रूरल रो ग्रोथ हबनी बा अर्बन रो सर्टेन सेक्टर रो ग्रोथ हबो आमे कहबा किछि रिच सेक्शन रो ग्रोथ हबो पोर सेक्शन को ग्रोथ पहुंची परिबो नै when I say inclusive growth अर्थात से ट्राइबल ही परे से एससी ही परे से एसटी ही परे से जनरल ही परे से एससीबीसी ही परे से ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट ही परे एवरी सेक्शन रो इकोनॉमिक ग्रोथ ही परिबो सो गवर्नमेंट रो फोकस जदी हमें कहबा द गवर्नमेंट फोकस इज ऑल सेक्शन केमती इकोनॉमिक्स रो बेनिफिट पाइबे ऑल सेक्शन केमती स्मूथली ग्रो अप करि परिबे सेतमे बजट रो हमर टारगेट रहिছে एंड दैट इज व्हाई समृद्ध ओडिशा and Viksit Gaon and Viksit Odisha by 2036 and this is the objective of the government and hope government is trying to push that economic growth forward, right? Next time आसीबा ना रेवेन्यू एंड फाइनेंस को आसीबा सो मु तुमको कहितली कि बजट रे हम कोन करू सो हाउ मच वी रिसीव हाउ मच वी स्पेंड जदी हम कहिबा तो रिसिप्ट्स जदि आमे रेवेन्यू एंड फाइनेंस के टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट है 2,33,300 क्रोर्स जोटा कि आमे कहिबा कि आमे एक्सपेंडिचर को आमे परे जिबा सेथरो आमे जे देखबा स्टेट रो निजर रेवेन्यू होची 66,000 आउट ऑफ 2,32,300 नॉन टैक्स होची 60,000 राइट दैट टैक्स हमरो टैक्स रहला 66,000 नॉन टैक्स देन देयर वुड बी आल्सो सेंट्रल ट्रांसफर मते करची 64 सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करची जोटा कि शेयर थाई तांकर जोटा 41% जोटा रही एज ऑफ नाउ 15th फाइनेंस कमिशन जदी हम कहबा तो दैट इज आल्सो देयर देन ग्रांट मिलची केते 41,592 करोड़ ग्रांट मिलची एंड बोरोइंग केते हेची देखिबा 58,000 बोरोइंग हेची सो दिस इज व्हाट बोरोइंग जोटा कि पेमेंट करिया को पड़िबो दैट मीन्स तमे बोरो करछो मन तो पेमेंट करो दिस इज द लिएबिलिटी सो दिस बोरोइंग बामे जाको कहूचे अदर रिसिप्ट जोटा हम कहूचे दैट इज 58,000 crore दैट मीन्स वी नीड टू रिटर्न दिस इज द लिएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड दीज आर नॉट लिएबिलिटीज ताले में सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जति ओडिशा गवर्नमेंट में कहबी बोरोइंग दैट इज द हाईएस्ट हम कहबा कमिंग फ्रॉम ईयर 64,000 सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करूची 60,000 रेवेन्यू आसुची नॉन टैक्स रो आसुची 60,000 टैक्स रो आसुची 60,000 सेंट्रल गवर्नमेंट देला 64,000 41,000 ग्रांट रो आसिकला से भी सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दबो राइट एंड बोरोइंग असला 58,000 सो दिस इज हाउ कि हम कहबा रिसीप्ट आसुची हम कहबा राइट सो दीज आर द रिसिप्ट बट हियर आई एम नॉट गोइंग टू डिवीजन के कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट ताकू मु जाउनी सिंपल मु कहबी कैपिटल रिसिप्ट काको कहा जाय द रिसिप्ट जो थरे नो लिएबिलिटीज एंड नो रिडक्शन ऑफ जदि एसेट हैला तल सेटा रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट कोन कहबा तार उल्टा इफ कैपिटल रिसिप्ट हम ताकू कहबा इफ दैट क्रिएट्स अ लिएबिलिटी एंड रिडक्शन ऑफ द एसेट हेता देन हम ताकू कहबा कैपिटल रिसिप्ट वाली सो ये जो रिसिप्ट होची दिस इज द रिसिप्ट रेवेन्यू एंड फाइनेंस एक्सपेंडिचर साइड को जेतरा में जिबा टोटल एक्सपेंडिचर ये हम देखि परबा हेल्थ रे केते होची एग्रीकल्चर रे केते हेल्थ होची तो एग्रीकल्चर जदि हम सेक्टर वाइज देखबा 37,838 crores by 12% increase हेची हेल्थ सेक्टर हम देखबा 23,635 crores एजुकेशन रे 41,272 crores कैपिटल एक्सपेंडिचर बा कैपेक्स जाको हम कोचे 65,000 crores गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये सब रे खर्च होची 1.7 लाख crores प्रोग्राम्स वगैरह जहां जहां कहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर 1.08 लाख and fiscal deficit हम कहते देखि परिबा 3.2% of the GDP is well below FRBM Act तो FRBM Act जदि हम का fiscal responsibilities budget management act 2003 रे जो FRBM Act आसीथला and our fiscal deficit is well below 3.5 which is the only state in India where the fiscal deficit is below 3.5 for the consecutive last 10 years हमें and this is the quite good achievement मु कहबी even previous government जेतल बीजेडी सरकार भी थिले दे
matlab maintain that one, and the legacy has been carried forward by the BJP government, right? So we will move ahead. New schemes hame dekhiba. The budget is having some new scheme which is very important to be remember. Is a new budget जो new schemes गुड़ा रही, these schemes are pretty important, बहुत ही ज़्यादा important. At least if you are not able to remember the amount यदि मन रहे, that does not makes any difference करिवनी बा किसी असुविधा हबो नाही. So what you need to do is that you need to remember the names of the schemes, the objective of the schemes, right? So that is the important. जोटी हम कहवा जमते कि अंतदय Gruha Yojana. So that means the housing sector for the social justice. That would be for the social justice. Then comes your but Subhadra Suraksha Yojana. Obviously Subhadra mein janiche almost 80 lakhs women are getting the benefits of the Subhadra Yojana. 50,000 for coming 5 years. 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, right? वर्ष को 10,000 टंका मिलूँ, तो दैट मीन्स दीटा किस्ती रे मिलियो समस्ते जानिछ. गोटे वुमेन्स डे रा गोटे रक्षाबंधन रे मिलियो 5,10,000 एंड दैट सुभद्रा सुरक्षा. देन समृद्ध सहर पई रहिछि. देन अटल बस स्टैंड्स पई दिया जाइछि, अटल बस स्टैंड्स मध्ये करा जिवो. देन स्वच्छ ओडिसा तापे मध्ये कराइछि, मतलब ओडिसा रे स्वच्छता को प्रमोट करा जाउछि. श्री जगन्नाथ दर्शन योजना आल्सो देयर. श्री फ्री रे लोक माने ट्रैवल्स करि परिबे, जगन्नाथ दर्शन करि परिबे. बिकॉज जगन्नाथ कहते कि ये 60 आम कहते कि 4 कोटी मौड़ मणि, 4 कोटी जनतार मौड़ मणि जगन्नाथ दर्शन किए न करने चाहती. तेणुक किसी लोक अच्छा जो मैंने जगन्नाथ दर्शन करते ना, से गवर्नमेंट नहीं आसी श्री जगन्नाथ दर्शन योजना फ्री रे जाकि जगन्नाथ दर्शन करें, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट ओडिशा पुष्टिक मिशन आम कहीपर, दैट इज ऑल्सो फॉर द सोशल जस्टिस पार्ट रे आसीबो, जो थ्रे कि द व्हाट आई वुड से स्टेट जमती कि हमर डीपीएसपी रे थिला कि स्टेट शुड एनहांस द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. तो से थ्रे आम कहीपर. देन मुख्यमंत्री व्हाट कन्या विवाह योजना, जो माने गरीब फैमिली रो लोक माने अछंती बा निज झील को विवाह करि पारु नाहंती, पिलाटा घरे रहउची, तापे टेंशन भी नउछंती, आ से टेंशन दूर करिया पे गवर्नमेंट नेकी आछंती मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, राइट? डिजास्टर मैनेजमेंट. ओडिशा इज वेल नोन फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट सिंस द 1999 पर ओडिशा गवर्नमेंट आम के प्रीवियस गवर्नमेंट, दैट मीन्स द नवीन बाबू जेतल सरकार थिला, बीजेडी सरकार जेतल थिला, सेतल बहुत बढ़िया काम करछन्ती डिजास्टर मैनेजमेंट ऊपर. इवन द प्रेजेंट गवर्नमेंट आम के जो बीजेपी सरकार मते बहुत बढ़िया काम करछन्ती. दाना साइक्लोन आम देखबा जोटा भीतर कनिका स्ट्राइक करथिला धामरा नियर द धामरा. There is no zero casualties. There is what? Zero casualties. So in terms of the disaster management कथा हम डिस्कस करू जेते बेले disaster management कोन हेता है, the Odisha government is having target that zero casualty. That is the target of the Odisha governments, and the legacy is been created and the put forwarded. The legacy, it was created by the Naveen Babu and it's been carry forwarded by the Majhi Babu, and hope that legacy will continue and the pride of zero casualty will be take forward ahead, right? So that is important. Next, what would be the vision? Vision 2036. That मो ऑलरेडी कही सारी कि विकसित गांव विकसित ओडिशा vision 2036 will be parallels, and apart from that, that means we are visionizing, we are what visualizing, we have envisaged ourselves to achieve the Viksit Odisha before the Viksit Bharat at the rate 47, at the rate what it would be, at the rate it would be 2047. As the central government has set the target that India at the rate 2047 will be Viksit Bharat, जो concept हमें रखी चे, and the Odisha is having set the target 37 well before 2036, right? 2036 तो almost हमें कहिबा 11 वर्ष बा 10 वर्ष पूर्व अचीव कर देबो ओडिशा. आ जदि ओडिशा अचीव करी देला, then it would be like no other than the surprise, and it would be surprise. Mu kahibi to it's completely, it would be surprise from coming a backward state to the aspirational state and to achieving the goal Viksit Odisha. That would be a beauty. I would say it would be completely beauty for the state of Odisha if the governments by Odisha achieve kari pare that status. चलो फिर आगु को बढ़िबा. So Odisha inspired to have $500 billion economy by 2036, at least 500 billion economy target रखिचंती. Strategy based on सबका साथ सबका विकास. So this is the theme.
सबका साथ and सबका विकास. What would be the value of the economy? $5 billion, the value of the economy by 2036, and Odisha would be also, government is saying that this could be $1 trillion. This could be $1 trillion भी ହେଇପାରେ. So these are the initiatives जोटा हमें discuss कले. So these initiatives are very important initiatives जहाँ को हमें मन रखिया पड़े exam perspective रो very important. And सबका साथ सबका विकास हमें देखिले. There is also 500 billion Subhadra plus. ना ये सुभद्रा योजना योतले जेतरो योजना आसिला when it was the campaigning बीजेपी सरकार जेतरो campaigning करूथिले ना because of that campaigning सुभद्रा योजना जेतरो आमे कहबा नवीन बाबू टाइम रे कालिया एंड बलिया योजना आसला एंड सुभद्रा बाकी रहिथिले भौणी तण भौणी पई निज मतलब माझी बाबू कहले यार भौणी के बाकी रो भौणी पई भी गोट योजना करतो दैट इज द सुभद्रा योजना let the women to have let the women empowerment to raise its peaks ताको गोटे पीक रे पहुंचेबा and more than 1 crore women are waiting to get the benefits of the Subhadra Yojana across the state. As of now, more than 1 crore women they have registered themselves for the Subhadra benefits by a and the government is also ransacking all sort of documents which is needed to avail the Subhadra Yojana. Right? So as of now, more than 70 lakhs women they are getting the Subhadra benefits. Right? Subhadra under benefits and this is for the women empowerment. To the all women in the states, seven women empowerment pe neki asyo. The Subhadra Yojana has been introduced in the last year and carry forward and agu ko madhye chalibo. Ethre kon ribo? What would be the Subhadra plus? When I say Subhadra plus, to ensure the welfare and the well-being of the Subhadra, the girl child ko bhi add kariba and of the women and the girl child. Matlab ethre kon ribo? Girls will be added, women's it was also there. So now the girls will be also added. The budget includes multiple schemes for the women empowerment, women safety and financial support. ये सब को add करूँगी. ताले हमें कहबा in the Subhadra plus रे हमें कौन कहबा in the Subhadra plus we are talking about that is the women safety. We are talking about what? Women safety. We do talk about women safety, women empowerment and financial support. Everything is there. So it will have benefit. It will benefit what? More than 80 lakhs women. Approx 1 crore women will get benefit, right? तो ये रहिबो सुभद्रा. आ व्यतीत आमे कहले सुनो सुभद्रा, कुहो सुभद्रा, सुभद्रा सेतु. These are the key words आमे कहबा. Like here, you can see. These are the expansion of Subhadra. जेतरा आमे कहूचे expansion of Subhadra योजना को जेतरा आमे expansion कथा कहूचे. Here would be the expansion of the Subhadra योजना. जेंते आमे कहबा किशोरी सुभद्रा, that means the young girls. Subhadra Sanchay सेमती how they will saving सेमती केमती करि परिबे. Women safety Subhadra Suraksha, Subhadra Sakhi, Subhadra Yatri, Sangha, Subhadra Sangha, Subhadra Kuha Subhadra, Subhadra Sahyogi, Subhadra Scholar, Subhadra and that is what? Sujagya Subhadra. So these are the amikaiba addition. These are the addition to the Subhadra Yojana addition karagala. Even the women they will have the scholarships. They can avail the scholarship from here. They will have call center to address all the sort of the issues is being faced by the Subhadra. I would say the women of Odisha. That will be also there. The Sakhi, there would be also friends, and the safety will be also given priority for the women across the state. Right. So, Subhadra plus re. When we do talk about the Subhadra plus, that means we are talking about that. The point of view, I say this to I discuss karuche. This is the holistic development of the women. That means when I talk about the Subhadra plus, every sort of requirement for the women to reach that, I would say what bird's eye viewpoint. So, everything is being provided. A complete and all sort of necessaries which is required to a capable woman to be a self-sufficient woman. Everything is here, right? So now we will move. Apart from that, so here you can see the financial support for the marriage of the poor girls. The budget ये मध्य provision रही थी कि हमें discuss करूँ जो young girls माने अछंती जो माने का हमें कहबा तो गरीब घर पिला माने अछंती बा गरीब बापा माँ अछंती समस्ते चाहती कि गरीब हेले मध्य से भी चाहते निज पिलार केमती बाहागरटा भल से ही परिबस and obviously this is the family festivals one type हमें कहि पर जाको समस्त चाहते भलरे मनाया पे बट किछि लोक करि पारंते नै सेति गवर्नमेंट भाबिले के ठीक अछि मुख्यमंत्री
कौन करेंगे क्या मैरिज ऑफ द पुअर गर्ल्स पे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नहीं कि आसले एंड मास मैरिज विल बी कंडक्टेड राइट जो मैंने निज झील को विवाह कर से मैंने एबल हो पाना गवर्नमेंट विल डू दिस इज बीन इंस्पायर्ड बाय द राजस्थान तो राजस्थान गवर्नमेंट रो स्कीम ऑलरेडी अच्छी सॉरी मध्य प्रदेश ऑलरेडी अच्छी एंड दैट इज व्हाई दिस गवर्नमेंट आल्सो कैरिंग फॉरवर्ड दैट लेगेसी और आई वुड से देयर कैरिंग इंस्पायर्ड बाय द मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंस्पायर्ड है कि सेमती जो मैंने पुअर गर्ल्स रही हैविंग द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स बहुत ही आम कह पुअर अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट दरकार मास मैरिज ऑर्गेनाइज करेंगे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट विल बी बियर ऑल द एक्सपेंसेस टू प्रोवाइड द गिफ्ट्स टू द ब्राइड्स तो इवन जो गिफ्ट्स रहिबो ब्राइड्स को जो गिफ्ट्स दिया जाबो से सब बाहागर सब खर्च करेंगे 12 crores इज बीन एलोकेटेड तापे केते 12 crores एलोकेट कराई छी नेक्स्ट इंपोर्टेंट स्कीम्स बजेट रो हम देखिबा तो आमे देखुचे कोन ओडिशा बजेट रो इंपोर्टेंट प्रोविजंस इंपोर्टेंट स्कीम्स को देखुची मु आपन मन को रिमाइंड करै दी कि ये बजेट रो डिटेल डिस्कशन मु करूची which would be very helpful for the writing the mains and the prelims qualifying the any sort of exam is been conducted by the Odisha government and the different agency in Odisha. Next हम देखबा प्रधानमंत्री मातृबंधन योजना also there जोटा के हम कहबा 208 crore is been allocated कर देछि जोटा कि maternity benefits रहिबो 12,000 for the what girl childs and 10,000 थाए boys ପାଇଁ and that is also restricted for the two child time कहबा that was the detail हबने but in case of the PBTs no such restriction is been there right next time आसीबा न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर द वुमेन्स एम्पावरमेंट मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना तापे आसी कोन मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना एथरे हमें कोन करबा एथरे केते रही छी 28 crores लेस देन लास्ट टू टिके कमी जाई छी बट न्यू ओडिशा पुष्टि मिशन लॉन्च मध्य करा जाई छी आ ओडे स्कीम रही छी न्यू ओडिशा पुष्टि मिशन विथ एन एडिशनल 100 crores टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन ऑफ द न्यूट्रिशनल सपोर्ट तो जदि हमें याकू देखिबा राइट so this one याकू जदि हम देखबा ये मध्य इंपोर्टेंट रही छी तो फ्रॉम हियर यू हैव टू रिमेंबर द न्यू ओडिशा पुष्टि मिशन ये गोटे रहिला एंड मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना तो ये दीटा कोन पई न्यूट्रिशन पई अच्छा पिलार जदि न्यूट्रिशन न रहबे ना पिला बेले जदि पिलाटा ठीक से खाय को न पाइला तार कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही परिबन एंड दैट इज व्हाई फॉर द ह्यूमन रिसोर्स रो डेवलपमेंट पई हम कहबा टू गेट द मैक्सिमम डिविडेंड ऑफ द ह्यूमन बा ह्यूमन रिसोर्स रो जो मैक्सिमम डिविडेंड रही छी ताको अचीव करे पे हेले वी नीड दैट राइट वी नीड दैट अदरवाइज हमको डिफिकल्ट हो एंड दैट इज व्हाई दिस मिशन इज देयर कि टू गेट द ह्यूमन डिविडेंड एंड द वुमन दैट इज द व्हाट द डेमोग्राफिक विंडो जोटा रही छी हम पई सो दैट इज आल्सो नॉट टू फार राइट तो by 20 that is the 55 we will close that the demographic window will be closed for India and we have to achieve that तन कोरिया को हमें रही छी नेक्स्ट हम जीवा मिशन शक्ति डिपार्टमेंट को दिया छी तो सेथरे के है बजेटरी एलोकेशन इंक्रीज करा छी 2775 crores वुमेन एम्पावरमेंट पाहिर कहै छी लक्ष्यपति दीदी आल्सो देयर दैट इज द सेल्फ रिलायंट एंटरप्रेन्योरशिप कराई छी लक्ष्यपति दीदी पई करा जाय छी केते crores मतलब दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट प्रीवियस एलोकेशन थिला 2762 crores बट एथर है 2775 crores मिशन शक्ति को दिया छी लक्ष्यपति जो मैंने दीदी रहे दैट मीन्स गवर्नमेंट इज आल्सो हैविंग टारगेट एटलीस्ट 75 lakhs वुमेन्स विल बी लक्ष्यपति टारगेट रखे बाय 2027 2027 सुधा 25 लाख वुमेन ओडिसा रे जेमती वर्ष को लाख टंका इनकम करिवो ता पई प्रोविजन रही एंड दैट इज द स्कीम लक्ष्यपति दीदी राइट होप यू आर गेटिंग मी केते रहबो टारगेट 25 lakhs वुमेन बाय 2027 नेक्स्ट जीवा में ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को आसीबा ये तो हमें सोशल जस्टिस पार्ट देखले इंफ्रास्ट्रक्चर को आसीबा बजेट रे जदि हम देखिबा ओडिशा गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 62,206 crore फॉर द रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर समृद्ध ओडिशा 2036 रे जो कथा मु स्टार्टिंग रु कहूची ता पे अलायंस विथ द दैट इज व्हाट कंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ द स्टेट फॉर्मेशन बा स्टेट जो 19 हम कहबा 36 मसिया रे जेतोल हेतला हला अप्रैल 1 हम कहबा ताकू सेलिब्रेट करे पे जो हम कहबा 100 वर्ष सेलिब्रेट करिबा आज ए डेवलप्ड स्टेट हम हबा सेति पे बजेटरी एलोकेशन अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट में देखिबा ऑलमोस्ट 40,000 crores has been developed for the rural development जो थ्रा में देखिबा 29,985 crores urban development and 13,000 crores has been हम कहबा comprehensive city road
कंजेशन प्लान तो सिटी रोड कंजेशन प्लान्स पे हम कहबा 13,000 कोटी टका दिया जाइए कना आजिकल सिटी मानकर कंजेशन होची जेमति कटक भुवनेश्वर बारमपुर राउरकेला ऑल दिस सिटीज हम कथा कहबा and 39,221 crores has been given for the rural development. Road infrastructure कहा जाए कि जो देशर रोड जिते भलो से देश सेते डेवलप बोली कहा जाए. Even John F. Kennedy दिने कहिथिले कि the roads of America is not developed because of America, but the America is developed because of the roads of America. That means the roads are the symbol of economic development of a region. If any region कौन सी region को अपन जाउचंती जदि से region रो रास्ता भलो अछि ना, if रास्ता देखो express highway is there, free lane highways is there, that means the region बहुत develop. And that is why जदि ओडिशा निजर ड्रीम को अचीव करियो by 36 आमे कहबा के 2036 जदि विकसित ओडिशा हो पइन चाहूची तल तारो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तार कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तार एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तार हेल्थ कथा नै ये सब भलो हेले ही ओडिशा डेवलप हे पर एंड दैट इज व्हाई ओडिशा तार कोन कोची रोड एंड हाईवे को केमति हमें ग्रोथ करे साइड पई तन रोड एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ करे पई हमें नै कि आसु छै कोन ता पे नुवा अथॉरिटी हबो द हाईवे अथॉरिटी ऑफ ओडिशा हबो जे कि एक्सपांशन ऑफ द हाईवेज जोटा रहे छै एक्जिस्टिंग सेथ पे कोन छै एनआई छै ओडिशा पार्ट ऑफ एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट 75,000 किलोमीटर वर्ल्ड क्लास रोड बाय 2030 स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट रोड प्लांट ताले हम कहबा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दउची ओडिशा हाईवे अथॉरिटी गोटे करा जबो ओडिशा हाईवे अथॉरिटी एनएचआई मध्ये 75,000 रो लॉन्ग कोस्टल मतलब हम टोटल हाईवे मध्ये करबे बाय 2019-30 29-30 सुधा कंप्लीट करबे ताले तळ एक्सप्रेस गोटे होची मालकानगिरी टू टिरिंग मयूरभंज को गोटे कहउची दाकू कहउची तळ एक्सप्रेस पूरा मालकानगिरी रो मयूरभंज को कनेक्ट करिवो एपटे मयूरभंज सेपटे मालकानगिरी झारसुगुड़ा बालेश्वर कॉरिडोर गोटे करा जाउची रोड नुवा रोड हबो दैट मींस नुवापड़ा टू अस्तरंग रोड गोटे करा जाउची देन हम कहया बुरुंदा बाहाल टू गोपालपुर गोटे रोड होउची बारमपुर टू जयपुर रोड करा जाउची जयपुर टू राउरकेला रोड हबो हम कहबा देन एक्सप्रेस हाईवे हमर रहची राउरकेला जलेश्वर हाईवे ये सब दैट इज द हम कहबा नुवा प्रोजेक्ट जोटा की रोड जगह हम कहबा अपार्ट फ्रॉम दैट ए एक्सप्रेस हाईवे मध्ये स्टेट हाईवेज अपग्रेडेशन मध्ये करा जो जो हाईवेज गुडा स्टेट हाईवे अछि ताको अपग्रेडेशन करा जो कोटा जेंते कि कन्वर्जन ऑफ 4 लेन रोड्स फॉर द मेजर आमे जते 4 लेन करा जो जोठी जोठी स्टेट हाईवेज गुडा अछि ताको सब 4 लेन करा जिवो डिस्ट्रिक्ट्स रोड अपग्रेडेड टू 2 लेन जोटा डिस्ट्रिक्ट रोड गुडा अछि ताको 2 लेन करा जिवो आउ जोटा हमर स्टेट हाईवेज अछि ताको सब 4 लेन करा जिवो टापिंग केते टंका दिया होची 6,502 कोटी टंका दिया होची इंप्रूविंग द 3,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क को इंप्रूव करा जिवो डेवलपमेंट ऑफ बहरमपुर जयपुर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे ये पूरा बहरमपुर ग्रीनफील्ड रहबो पूरा ब्रांड न्यू रहबो नेक्स्ट हम आसीबा पोर्ट एंड मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पई 3,470 crores अंडर द मुख्यमंत्री सड़क योजना दिया होची 2,000 crore each फॉर द सेतु बंधना योजना एंड विकसित गांव विकसित ओडिशा पई 5,000 कोटी टंका दिया जायछि ताले हम कहबा विकसित गांव विकसित ओडिशा पई 5,000 crore 2,000 crore फॉर द सेतु बंधना योजना जोठी जोठी ओडिशा सारा ब्रिजेस पई ब्रिजेस काइना जोठी पोलो नाही ये सब नाही कराउछि होप के ए थ्रू बाकी जो जो गांव माने बेनिफिट पाइबे अंडर द मुख्यमंत्री सड़क योजना में कहि परिबा दैट राइट मुख्यमंत्री सड़क योजना अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप पोर्ट एंड मैरिटाइम रे जदि हम कहिबा महानदी रिवर एंड प्रोजेक्ट करा जो फॉर द शिप रिपेयर एंड बिल्डिंग तो शिप रिपेयर एंड बिल्डिंग पे इंपोर्टेंट पार्ट बहुत इंपोर्टेंट एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट पार्ट मु कहबी प्रथम थर पे ओडिसा रे हम देखिबा शिप रिपेयरिंग सेंटर करा जिवो सो महानदी रिवर लाइन प्रोजेक्ट पोर्ट रहिबो जो थरे शिप रिपेयर एंड शिप बिल्डिंग हे परिबो द न्यू पोर्ट आउ कोठी हबो इंचुडी ऑब्वियसली भद्रक रे हम इंचुडी एंड बाहुतार मध्य करा जिवो राइट इंचुडी हम कहबा सो बालेश्वर इंचुडी दैट वुड बी व्हाट बालेश्वर एंड बाहुदा आल्सो बाहुदा हम कहबा नेक्स्ट टाइम आसीबा सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर ए केस रे मध्ये 1 मिनिट तो देयर वुड बी सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर इंक्रीज इन द पेंशन जो पेंशन रे मध्ये पैसा को बढ़ा जाईछि 18% हाइक इन सोशल सिक्योरिटी बजट करा जाईछि मधुबाबू पेंशन नेशनल सोसाइटी सोशल दैट इज व्हाट असिस्टेंस प्रोग्राम
जो थि पई दिया 271 crores allocated को पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट पई ताले हमें कहबा 8567 crores for 57 lakhs हमें कहबा पेंशन अंडर द मधुबाबू योजना पई सेते हेची 8567 कोटी टंका दिया जो 57 लाख लोक माने बेनिफिट पाइबे पेंशन योजना रे प्लस 271 कोटी टंका दिया जायछि पीडब्ल्यूडी माने जो माने कि हमें कहबा दिव्यांग अछंती भाई भौणी माने से माने बेनिफिट पाइबे बोली सोशल जस्टिस पार्ट को मध्ये हम देखितले देन पुरी श्री जगन्नाथ जोटा हम कहले जगन्नाथ दर्शन स्कीम जो लोक माने जाई पारु नहंती ये चारि घटी मौडी माने मौनर देवता हमें कहबा बा कहबा द लॉर्ड ऑफ जगन्नाथ हम कहबा जे कि भगवान विश्वर नाथ बोली कहा जाए तांको तो से जो पुरी रे बसचंती बहुत लोक तांको देखि पारंते नहीं जाई पारंते नहीं तो तांको देखिया पई मध्ये समस्त चाहंती कि एटलीस्ट जगांकर के दर्शन मिल जो तो जो लोक माने सेटे जाई पारुनहंती बा निज पाखर अर्थ नै कोनसे प्रकार जाई पारुनहंती तांको पई गवर्नमेंट नेकी आछंती जगन्नाथ दर्शन स्कीम जोटा मुखली द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द श्री जगन्नाथ दर्शन योजना एम्स फॉर द फ्री ट्रैवल फॉर द पिलग्रिम्स for to Sri Jagannath temple focus on the Mahaprasad distribution and the tourism infrastructure development पे करा जायछि के लोक माने दिखाय बजट allocation केते 820 crores allocated for the tourism sectors पई मध्ये रहिछि राइट तो एथरे इंक्रीज करो 20 crores from the previous years रे देन हमर छ जगन्नाथ दर्शन योजना तो देखिए 30 crores रहिछि हमर 30 crores is been allocated for the जगन्नाथ दर्शन पई 30 कोटी टका दिया जायछि ताले जदि हम कहबा the 30 crores जगन्नाथ दर्शन पई राइट नेक्स्ट हम देखिबा the next schemes is for the infrastructure development पई हम कहबा 225 कोटी टका अलोकेट करैछि फॉर द मा तारिणी जदि हम ए टूरिज्म अंडर आसीबा टूरिज्म अंडर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहिछि मा तारिणी टेंपल जोटा कि घटगां केउझर रहिछि तांकर डेवलपमेंट पई 225 कोटी टका गवर्नमेंट अलोकेट करचंती देन जदि हम देखिबा रीडेवलपमेंट प्लान जोटा कि हमर साखी गोपाल टेंपल रहिछि पूरी साखी गोपाल टेंपल महिमा गड़ी जोटा जोरंदा रहिछि कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रांट शून्य मंडप मध्य करा जाउछि या पई मध्य हम देखबा जो टूरिज्म पई गवर्नमेंट खर्च करूछन्ते चाहे से शून्य मंडप कथा नै जाओ चाहे से साखी गोपाल टेंपल कथा नै जाओ चाहे से हमें मां तारिणी का टेंपल कथा नै जाओ अपार्ट फ्रॉम दैट टूरिस्ट प्लस जो प्लेसेस गुडा रहिछि हमरो जेमति आपण देखि परिबे देवमाली कथा नै जंतु धौली कथा नियंतु चिलिका कथा नियंतु खंडगिरी उदयगिरी कथा नियंतु खिचिंग कथा नियंतु सातकोशिया सिमली पाल्स ये सब मध्य डेवलप करा जाउछि आज आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पई कहि परिबा सेमती वुमेन सेफ्टी एंड टूरिज्म पई मध्य महिला दैट इज हमें कहबा बट पर्यटन मित्र मध्य करा जो टूरिस्ट एरिया रे वुमेन्स मान का सेफ्टी बा तांको सहायता करिया पई ए सब करा जाउछि टू बी डेवलप्ड एट द 30 cities एम टू क्रिएटिंग द सेफ्टी एंड वेलकमिंग एनवायरनमेंट फॉर द वुमेन विजिटर्स एटलीस्ट वुमेन्स माने जेमति सेफली विजिट करि परिबे एजुकेशन सेक्टर पई हम देखिबा 41,237 कोटी टका अलोकेट प्राइस फॉर द एजुकेशन सेक्टर्स जोटा कि हमें प्रीवियसली हेइथिले हमर केते 31,000 crores जोटा कि हमें देखबा 18% इंक्रीमेंट हैछि रिमेनिंग फंड्स जोटा अलोकेटेड फॉर द हायर एजुकेशन पई रहिछि जा भी हो तो हमें कहबा 41,273 कोटी टका एजुकेशन को रहिछि तो एजुकेशन रे जदि हमें देखबा बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड एंड स्कूल एजुकेशन पई मध्य देखबा हमें 45 मतलब कहते 45,000 प्री प्राइमरी क्लासेस जोटा कि हम शिशु भाटिका कथा कोचे कना दैट इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जोटा 2020 हमर एनईपी जाकू कोचे लागू करबा द्वारा जो हमें पढिथिले कि 5+3+3+4 ये जो हमें पढिथिले तो सेथरे कोन आसी जो शिशु भाटिका रहबो जाकू हम कोचे प्ले स्कूल तो सब जगह रे हमर कोन रहबो प्ले स्कूल करा जो द प्राइमरी ऑल द प्राइमरी स्कूल रे सब शिशु भाटिका हबो बा प्ले स्कूल हबो दिस इज व्हाट प्ले स्कूल तो ये जो शिशु भाटिका हमें कहूचे दिस वन इज द प्ले स्कूल तो ये जो प्ले स्कूल बा शिशु भाटिका रहिबो ये सब प्राइमरी स्कूल रे कंपलसरी रहिबो तेनु एठी कोन करबो पिला कोन करिवे प्ले स्कूल रे पढिबे ता आगुरु कोन थिला हमें डायरेक्ट क्लास 1 रु पढुथले केबे नाही सो एनईपी नेशनल एजुकेशन जो हमर 2020 को जेबे ठु लागू हे गेला जाको हम कहूचे एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आसबे तार शिशु भाटिका ओपन हे गेला जोटे कि सब ऑल प्राइमरी स्कूल रे हबो ता पई हमें ए जो शिशु भाटिका रहिछि सेठी कोन रहइबो मदर टंग रे पिला पाठ पढिबे राइट दैट मीन्स आमो पाठ आमो भाषा रे जाको हम कहूचे मदर टंग रे पढा जिवो विथ द व्हाट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमें कहबा
दिस इज बहुत ही बढ़िया पॉलिसी आम ताको एग्जीक्यूट कले बहुत बढ़िया देन अपग्रेडेशन हम केते 7000 स्कूल जोटा रही है पंचायत लेवल अपग्रेडेशन हम विथ द कॉस्ट ऑफ 2960 crores देन 50 प्लस हेरिटेज स्कूल्स मध्ये रहइबो 60 crores हम कहबा सेमती मिड डे मील रे कोन करा जबो जो नवम आ दशम पिला को वर्तमान मिड डे मील मिलिबो आगुरु अष्टम क्लास जाई थिला वर्तमान नवम और दशम पिला को मध्य मिड डे मील ओडिशा सरकार देबे सेथरे एक मिलिबो प्रोटीन रिच लड्डू मिलिबो मुख्यमंत्री दैट इज आमे कह प्रोत्साहन योजना तो एथरे कोन रहि जबो एक आ प्रोटीन लड्डूज वगैरह दिया जबो अपार्ट फ्रॉम दैट आमे कहले जो दशम श्रेणी नवम और दशम श्रेणी पिला मध्य बेनिफिट पाइबे से माने मध्य मिड डे मील रो बेनिफिट पाइबे आ जो माने एससी एसटी ओबीसी एबानी जो रहिले समान को स्कॉलरशिप मध्ये नेकी आसंती गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप रो ना होची कोन शहीद लक्ष्मण नायक आदर्श विद्यालय जो सब रही एमान को स्कॉलरशिप तो रही प्लस आम कहवा न्यू गोटे स्कूल एटा टिके मते करेक्ट कर दियो ये जो स्कॉलरशिप पई आम कहबा 11000 सॉरी 1426 कोटी टंका अलोकेट करा जायछि देन शहीद लक्ष्मण नायक आदर्श विद्यालय गोटे करा जाउछि विथ द कॉस्ट ऑफ व्हाट 100 crore with the cost of 100 crore नुआ स्कूल गोटे करा गला जेमति हमें देखितले एकलव्य रेजिडेंटल मॉडल स्कूल कथा नहीं जाओ सो दिस इज हाउ देन ये रेजिडेंटल स्कूल रहइबो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एससी एसटी डिपार्टमेंट्स ताकू से करिवे तो दैट मींस लक्ष्मण नायक जो शहीद लक्ष्मण नायक रहइबो ये जो स्कॉलरशिप तो मिलिबो जो हमर लक्ष्मण नायक जो आदर्श विद्यालय रहइबो दैट वुड बी फॉर द एससी एंड एसटीज डिपार्टमेंट्स पई रहइबो नेक्स्ट अछबा हायर एजुकेशन पई मध्ये हम कहबा 375 crores देछि फॉर द यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट्स एडेड कॉलेज मध्ये रहइबा ट्राइबल लैंग्वेज लैब एसु मध्ये हे परु तापै 10 कोटी टका दिया जायछि ताकि ट्राइबल लैंग्वेज रिसर्च हे परु पिला पाठ पढि परिबे मदर टंग रे न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटीज करा जिवो दैट इज द उत्कर्ष छात्र वृत्ति स्कीम जाको कहबा उत्कर्ष छात्र वृत्ति स्कीम्स एथरे मध्ये कोन स्कॉलरशिप मिलिबो केते 100 स्कॉलरशिप्स ईयरली मिलिबो 30 एससी एसटीज पिला पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टरेट स्टडीज में ताको मिली जबो मतलब हम कहबा उत्कर्ष छात्रवृत्ति स्कीम जो थे एससी एसटी पिला को मिलिबो कोन डॉक्टरेट एंड पीएचडी पीएचडी कला बेले ताको सपोर्ट करिवे 5 crores फॉर द स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स में मध्ये रही छी अपार्ट फ्रॉम दैट रिसर्च पई जदी हम देखबा 23 दैट इज व्हाट हम कहबा 23 अंडर द सीएम रिसर्च इनोवेशन फेलोशिप्स सेमती हम कहबा 20 crores फॉर द ओडिशा स्टेट रिसर्च फंड एंड 50 crores फॉर द गर्ल्स मध्ये कराची एक्सेसिबिलिटी टॉयलेट्स गर्ल्स मानकर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स रे से सब करिया पई 50 crores मध्ये दियाइछि इवन सामे जदी कहबा कि पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स इन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस टू बी इंक्रीज बाय 20% पोस्ट ग्रेजुएशन सीट सब मध्ये इंक्रीज हे परिबो तेने आसीबो कैपिटल रीजन रिंग रोड भुवनेश्वर चारिपटे गोटे रिंग रोड हबो ताकि भुवनेश्वर कंजेशन को दूरा करा जिवो एंड भुवनेश्वर कम्युनिकेशन को स्मूथ करा जाय परिबो केते खर्च हबो 13000 कोटी टका खर्च हबो भुवनेश्वर आउटर रिंग रोड क्रूशियल दैट इज व्हाट फॉर द क्रूशियल एंड द क्रिटिकल अर्बन प्रोजेक्ट 2025 बजेट करला एड्रेस कोन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप एंड मेट्रोपॉलिटन रीजन ही परिबे गोटे मेट्रोपॉलिटन रीजन ऑफ टू कोस्टल रीजन आमे जाय तो ये गोटे मेट्रोपॉलिटन रीजन हो पे जाउछि द पार्ट ऑफ द ब्रॉडर रीजन टू डेवलप ए मेट्रोपॉलिटन रीजन आमे करिबा बोली राइट नेक्स्ट आसीबा आमे रोड एंड अर्बन आमे देखिबा तो आमे देखिबा कोन सिटी रोड एंड अर्बन डेवलपमेंट प्लान कॉम्प्रिहेंसिव सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम तो जदि आमे प्रोग्राम कथा कहिबा कि जदि आमे भुवनेश्वर को आमे देखिबा ना गवर्नमेंट चाहूची कि भुवनेश्वर पाखरे आ गोटे नुआ शहर करिवे बोली गोटे नुआ भुवनेश्वर हबो बोली कहा जाउची ये न्यू सिटी विल बी देयर इन ओडिशा गोटे नुआ शहर ओडिशा रे हबो जोटे कि भुवनेश्वर आख पाखरे हबो से कोन हबो सेटा आमे परे देखिबा राइट तो आम कहे मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना पई 1100 कोटी टंका आउटर रिंग रोड कथा हमें डिस्कस करिचे राइट जो आमर सिटी डेवलपमेंट जो सिटी रोड एंड अर्बन डेवलपमेंट अंडर कौन कौन आसुची कॉम्प्रिहेंसिव आम कह डीकंजेशन प्लान रोची ट्रैफिक को केमती स्मूथ करबा मोबिलिटी केमती इजी हे परिबो शहरी विकास केमती हे परिबो समृद्ध शहर स्कीम पे 408 कोटी टंका दिया गला अर्बन सिविल एमिनिटीज पे लोक माने पानी फानी ये सुविधा सब पाई परिबे ट्रैफिक प्रॉब्लम जमती न होबो गवर्नमेंट एम्स टू स्ट्रेंथन द कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मध्ये करि परिबे सीमलेस मोबिलिटी ये सब हे परिबो हाउसिंग पे अर्बन हाउसिंग मध्ये रहिछि भुवनेश्वर आख पाखरे गोटे नुआ सिटी करा जिवो 200 कोटी टंका ता पे अलोकेट करछंती गवर्नमेंट 200 कोटी टंका
785 कोटी टंका पीएम आवास योजना रे आसीबो जोटा कि 2700 आमे कहबा व्हाट दैट मींस 785 crores अंडर द पीएम आवास योजना फॉर 27000 अफोर्डेबल हाउसेस मध्ये कराजिबो अफोर्डेबल हाउसेस मध्ये आमे कहबा पीएम आवास योजना अंडर रे 785 crores ओडिशा गवर्नमेंट सैंक्शन कले देन 9816 crores allocate कले अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर्स पई राइट सेमती वेस्ट सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम पे मध्ये गवर्नमेंट नहीं चंती जेमति कि हम 340 crores फॉर द सीवेज एंड ड्रेनेज प्रोजेक्ट पे नॉले शहर रे अळी आवर्जना होची रोग व्याधि होची 300 कोटी टंका दउचंती काकू स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज एंड इनोवेशन पई तो अर्बन डेवलपमेंट पई ये जहां में देखुथिले अर्बन डेवलपमेंट पे ओडिशा गवर्नमेंट कोन करचंती एग्रीकल्चर पई आसीबा एग्रीकल्चर जेतरा हम देखुचे ना ओडिशा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पई कोन करचे एग्रीकल्चर को कहा जाय कि बैकबोन ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी मैक्सिमम लोक जदि एम्प्लॉयमेंट हेकी थाए आ ओडिसा रे अधिक लोक एग्रीकल्चर पर डिपेंड करूची आ सबुठ इंपोर्टेंट कथा मार्जिनल फार्मर संख्या भी अधिक तेणु करके हमें 37838 कोटी टंका अलोकेट करचंती बजट पई जो थरे हमें देखिबा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर बाय द 2025-2026 पई 12% इंक्रीज हेची फ्रॉम द प्रीवियस इयर्स टू जोटे 33919 crores टू वर्तमान आसी पहुंची 37883 तो एग्रीकल्चर पई जो बजेटर एलोकेशन बिल्कुल बढ़ी छी 7100 कोटी टंका एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट पई बढ़ी छी 6080 कोटी टंका इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स पई रही छी राइट सेमति हम देखिबा एग्रीकल्चर पर जेतरा हम जिबा ना एग्रीकल्चर हमें की एग्रीकल्चर स्कीम टिके हम देखे देबा कि एग्रीकल्चर स्कीम जेतरा हम कहचे समृद्ध कृषक योजना में कहबा कालिया योजना कथा नहीं जा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कथा नहीं जा तो ये सब हमर रखबा कि एग्रीकल्चर पई तो एग्रीकल्चर पई समृद्ध कृषक योजना जो थरे गवर्नमेंट दउचंती केते दैट मींस हम कहबा जो पैडी प्रोक्यूरमेंट हबो 3100 कोटी टंका एमएसपी जोटा कि एमएसपी बढ़ा जिवो एमएसपी केते रहइबो दैट इज 3100 देन 12000 कोटी टंका एलोकेशन कले डायरेक्ट सपोर्ट पई फार्मर्स मन को डायरेक्ट सपोर्ट पई जेमते हम कहबा फॉर द डायरेक्ट सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स गवर्नमेंट मध्ये सपोर्ट करूचंती केते दैट इज द 12000 crores कालिया ये हमर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स तांको मध्ये बेनिफिट्स मिलिबो सस्टेनेबल्स हमें जो एग्रीकल्चर पई 100 कोटी टंका दिया होची श्री अन्न अभियान जाको हम कहछु मिलेट मिशन वगैरह होची मिलेट फार्मिंग पई तो मिलेट फार्मिंग पई केते देले 100 crores देले सीआर 100 crores देले कोन मिलेट पई जाको कहछु श्री अन्न बोली कहूचे सो दिस इज इंपोर्टेंट इरिगेशन पई जदि हम कहबा वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट पई ताको देले 1485 कोटी टंका डैम सेफ्टी और रिवर रिजुवेनेशन पई 3886 कोटी टंका बहुत इंपोर्टेंट हिराकुद डैम पई खाली दिया गला 250 कोटी टंका फ्रेश वाटर फिशरीज ड्रिंकिंग वाटर ए सब पई रिवर कंजर्वेशन पई हमें मध्य देखिबा कारण रिवर कंजर्वेशन हबा बहुत जरूरी डैम कंजर्वेशन हबा बहुत जरूरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हे परिबोनी इरिगेशन हे परिबो नाही नहले देन आम अस्मिता ओडिया कल्चर डेवलपमेंट पई देखिबा 482 कोटी टंका ओडिया लैंग्वेज लिटरेचर हेरिटेज को केमती बंचै के रखबा मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना पई 154 कोटी टंका दिया गला 50 कोटी टंका दिया जाय दैट इज व्हाट बालुका बन एट सत्यवादी रे नुआ स्कूल होची केना से जो पंचसखा कथा मने पकाओ इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट पे 10760 कोटी टंका एलोकेट करचंती होम डिपार्टमेंट पे फोकस एरिया कोन टेक्नोलॉजी ड्रिवन पॉलिसीज अपग्रेडेड फॉरेंसिक्स साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आजिकली बहुत साइबर अटैक होची सेति पे अपार्ट फ्रॉम दैट जुडिशियल सिस्टम एंड लॉ एनफोर्समेंट पे 525 कोटी टंका जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर 743 कोटी टंका दउचंती मॉडर्नाइजेशन ऑफ द जेल्स एंड पुलिस फैसिलिटीज डिजास्टर मैनेजमेंट पे दउचंती 123 कोटी टंका फॉर द डिजास्टर रेजिलियंस इमरजेंसी ये सब पई तो ये सब हमें देखितले राइट तो ये थिला ओडिशा बजेट रो हमें देखिले पूरा समरी ऑफ ओडिशा बजेट एंड होप आपण मन को लेसन टी भलो आसतो जदी आपण मन को लेसन टी भलो लागि थाए तले कमेंट करंतु शेयर करंतु लाइक करंतु एंड दैट इज द हमें कहबा एनर्जी जोडे के हमको इंस्पायर करथे नेक्स्ट वीडियो बने पे एंड आई विश आपण मन को भलो लागिथो शेयर करंतु लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु आ हमरो कोर्सेस रहिची फाउंडेशन बैच जोटा रही प्रिलिम्स मेंस अपकमिंग ओडी दैट मींस हमें कहबा ओएस एग्जाम पई एनरोल करंतु ऑफर मध्ये चलछि थैंक यू एवरीवन हैव अ गुड डे टू ऑल थैंक यू ऑल